Nature and causes of forgetting. So far, we have discussed the concept of memory, how we encode information, how we store information, how we can recall information, different kind of long-term memory, like which store different kind of information, how we use information when we solve any cognitive task, like the role of working memory. Now, the next question is: many times we forget whatever we have stored, or whatever, like we forget answers while writing questions. We forget some experiences of our last summer vacation. We forget some memories of our college lives, or our childhood of our childhood. So the question is why we forget, or what caused forgetting. So now we'll discuss different theories of forgetting. The first psychologist who tried to study the concept of forgetting was Ebbinghaus. Ebbinghaus used nonsense syllable to see how we forget things. From this curve, which we can see that forgetting was initially the forgetting was greater during the first 9 hours after learning the thing, but gradually the with time the forgetting gradually decrease. So there is a sharp decline in memory at the initial phase, but that drop in forgetting is gradually decreased, gradually decline with time. Next, we'll discuss forgetting due to trace decay. So, according to this theory, when we memorize something, there are some changes that are traces in the central nervous system. But if we don't you memorize the thing, or don't practice that thing, that traces gradually fade away because of long disuse. So, as a result, we forget that thing. So, let me explain it in an example. Suppose I have read a particular story, and and the informations from that thing are there in my mind, which have created some physical changes, created a stress in my mind. But I didn't read the story for a long period of time. Then, due to misuse, no, sorry, due to disuse, the stresses will fade away, and I may forget many aspects or many portion of that story. So this is called stress decay theory. But this theory is criticized because according to this theory, if we don't practice something, then we are going to forget the thing. But many times it happens that then we should forget the thing after sleep also, because during sleep we are not actively practicing the thing. But it is observed that people's memory improve even after people's memory does not decline after sleep, even their memory improves. Memory of the particular thing improves after sleeping. So from this criticism, here comes the second theory which explain forgetting, that is forgetting due to interference. Interference means when we store information, so we form association between items. But when we try to retrieve the information, then the association, they compete with each other for the retrieval, and they interfere with each other. Means memory of one event may interfere memory of another event, may prevent another event to prevent us from bringing the memory of another event. That is called interference. So let me explain with an example. Suppose I study history, and after that I study geography. So whatever I've learned the history may interfere my memory of what I have learned in the geography, or it can be in other way, like whatever I learned the geography may interfere what I have learned in when I was studying history. So information of memory of one event may interfere, may prevent another memory of another event to develop, and that cause interference. There are two type of interference: proactive and retroactive. Proactive, also known as forward moving. Proactive means when past learning interfere our recall of later learning. Like I have studied history. After that I have studied economics. So whatever I so my
So my learning of like whatever I learn, whatever study history में मैंने जो पढ़ा उसके वजह से मैं इकोनॉमिक्स में जो पढ़ी हूँ वो मुझे याद नहीं आ रहा है. दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. एंड रेट्रोएक्टिव में क्या होता है? रेट्रोएक्टिव में जो बाद में हम लोग करते हैं वो पहले मैंने जो किया जो पढ़ा उसका मेमोरी में इंटरफेरेंस करता है. जैसे कि मैंने इंग्लिश पढ़ा, उसके बाद मैंने फ्रेंच पढ़ा. तो फ्रेंच में जो पढ़ा वो मेरा इंग्लिश में जो मैंने जो पढ़ा उसका मेमोरी को इंटरफेयर करता है, उसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. So both proactive and retroactive interference actually can create forgetting, can lead to the forgetting. So what can we do? Either we have to, so to avoid this kind of interference we have to give minimum time gap between each lesson. Like ये सब कुछ पढ़ने के बीच में मुझे थोड़ा टाइम गैप देना चाहिए, सो दैट कि इंटरफेरेंस हम लोगों का जो मेमोरी है उसको अफेक्ट नहीं कर सके. Third theory is forgetting due to retrieval failure. सो फॉरगेटिंग मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग कैसे वो रिट्राइव करते हैं इंफॉर्मेशन को, हम लोग स्टोरेज से कैसे रिट्राइव करते हैं. सो फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्राइवल फेलियर में क्या होता है? हम लोग रिट्राइव ठीक से रिट्राइव नहीं कर पाता है. मे बी जो क्यू है, जो हिंट्स है वो ठीक से प्रेजेंट नहीं है जो मुझे रिकॉल करने में, रिट्राइव करने में हेल्प कर सकता है. इसलिए हम लोग कुछ किसी को याद नहीं कर पाते हैं. Tulving and his associate actually proposed this concept of retrieval failure. Then repressed memory. Sigmund Freud gave the concept of repressed memory. Sometimes we experience traumatic event, negative event, and these events are emotionally hurt us emotionally, and these events are very much bring distress to us. So we try to repress them, we try to forget them, we just push back those events to our unconsciousness. So this is called repressed memory. सो अगर कुछ ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट होता है, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है जो हम लोगों के लिए हम लोग ले नहीं पाते हैं, हम लोग के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत डिस्ट्रेस ले सकता है, तो हम लोग बहुत टाइम वो सब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को अनकॉन्शियस माइंड में हम लोग पुश कर देते हैं एंड उसके बारे में सब कुछ भूल जाता है. दिस इज कॉल्ड रिप्रेस मेमोरी. लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. One person, suppose one person he had a traumatic experience in the childhood. Maybe कुछ हुआ था, कुछ नेगेटिव हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत डर गया था. तो वो क्या किया, उसने अपना जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसको अपना अनकॉन्शियस में चला गया, उसने उस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ भूल गया. दैट इज कॉल्ड रिप्रेस मेमोरी. बट रिप्रेस मेमोरी इज अ रीजन बिहाइंड मेनी साइकोपैथोलॉजी. सेकेंड, वी कैन ऑल्सो फॉरगेट व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस एंड हाई एंग्जाइटी. हम लोग जब स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तब भी बहुत कुछ हम लोग भूल जाते हैं. जैसे कि एग्जाम के टाइम में बहुत स्ट्रेस है, हाई स्ट्रेस लेवल है, हाई एंग्जाइटी है, इसलिए बहुत कुछ आंसर जो मुझे पता था वो मैं भूल गई. सो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कैन ऑल्सो क्रिएट forgetfulness. Next, we'll discuss some strategies to enhance our memories. The strategies that used to enhance our memories are called mnemonics. There are two types of mnemonics that I will discuss here. First, mnemonics using images, and second, mnemonics using organization. So we can create image of the thing that we want to remember, a clear image, and that may help us to remember the thing. Two prominent method under this mnemonics are first keyword method and second method of Loki. Keyword method means here we use a keyword to remember the new word. So suppose I want to learn a new language. मुझे कुछ new language सीखना है, जैसे कि मुझे फ्रेंच सीखना है, लेकिन मैं उतना अच्छे से मुझे फ्रेंच नहीं पता. तो फ्रेंच का कोई वर्ड है जो इंग्लिश वर्ड से, जो मुझे अच्छे से जो लैंग्वेज पता है उससे मिलता जुलता है. तो मैं क्या करूँगी, जो इंग्लिश वर्ड है, जो सिमिलर इंग्लिश वर्ड है उसको मैं एज ए कीवर्ड यूज़ करूँगी, और उसके हेल्प से मैं जो फ्रेंच वर्ड है जो मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है उसको याद करने का कोशिश करूँगी. दिस इज कॉल्ड कीवर्ड मेथड. सेकेंड इज मेथड ऑफ लोकी. Loki means place. So in method of Loki, what we did, we tried to remember things by visualizing their space, their place, their position in the space. जैसे कि suppose I want to buy bread, ketchup,
केचप और स्पाइसेस सोप फ्रॉम द मार्केट. सो मैं ऐसे कैसे मैं याद रख रही हूँ, मैं मार्केट में जाके जो जहाँ जहाँ मेरे घर में रहता है, जैसे कि ब्रेड रहता है फ्रिज में और केचप रहता है फ्रिज में और सोप रहता है बाथरूम में, वो स्पेस के साथ उसका जहाँ जहाँ रहता है वो याद करके मैं वो जो चीज़ है उसको याद रखने का कोशिश करती हूँ. दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ लोकी. Now, second mnemonic strategy is using organization. So we organize the information in a way so that we can retrieve, recall the information. So कैसे मैं organize करती हूँ, जैसे कि chunking already I have discussed. In chunking, what we did, we divide the entire system into smaller units so that we can remember. So suppose I have to remember 12-digit number. So what I can do, I can break the number into small unit, like each consists of three digit. Then it will be easier for me to remember and retrieve the information. Another technique we use is first letter technique. First letter technique means to remember something we use the first letter to first letter. Like suppose I have to remember the colors of rainbow. So what can I do? I can remember the first letter of each color, like B, I, B, violet, indigo, blue, like this. So it will help me to remember the colors of rainbow. Or suppose I want to suppose I want to remember name of all Mughal emperors. So what can I do? मुझे सब जो मुगल एम्पायर थे उन लोगों का नाम याद करना है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, सबका जो नाम का जो पहला लेटर है उसको मैं याद करके रख सकती हूँ, जिससे मैं उन लोगों का नाम याद कर पाऊंगी. Another technique is another technique Retrieval cues means some hints that will help me to remember the thing. So what we have to do, जब हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो हम लोग को कुछ हिंट कुछ क्यू याद रखना चाहिए जो मुझे इंटायर थिंग को याद करने में हेल्प करेगा. सो वो क्यू के साथ वो जो रिट्राइवल क्यू है उसको साथ मुझे क्या करना है, पहले मुझे वो क्यूज को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस क्यूज के साथ इंटायर टेक्स्ट को लिंक करना है. So that whenever I remember the cues, I can remember the entire things which are linked with the cues. So these are some technique we can use to remember information. Okay. Some other strategies are using deep level processing. Already I've discussed that deep level processing means processing in terms of meaning. So if we process the information in terms of meaning, it will be easier for us to remember, and we can remember the information for a long period of time. So conceptual understanding is always better than simply repeating the information. सेकेंड मिनिमाइजिंग द इंटरफेरेंस की वजह से हम लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं. सो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि हम लोग को ऐसे अपना स्टडी को अपना पढ़ाई को ऐसे प्लानिंग करना चाहिए कि हम लोग इंटरफेरेंस को रोक सके. जैसे कि क्या होता है, जब सिमिलर थिंग्स होता है उसमें इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, तो हम लोग सिमिलर थिंग एक साथ नहीं लर्न करेंगे. वी शुड डू देम सेपरेटली. और हम लोग को जो लर्निंग के बीच में थोड़ा रेस्ट पीरियड देना चाहिए, सो दैट वी कैन अवॉइड इंटरफेरेंस. ऑल्सो हम लोग को क्यू यूज़ करना चाहिए, हिंट्स यूज़ करना चाहिए जो हम लोग को रिट्राइव करने में इजी होता है, इजी हेल्प करता है. थॉमस एंड रॉबिन्सन एक टेक्निक डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड PQRST मेथड. दिस मेथड इन्वॉल्व प्रीव्यू, क्वेश्चन, read, self recitation and test. So in this method what we do, first we have to uh, so in preview we have to go through the entire content and see and check and to be familiar with the content. Then we have to raise question from the text. Then we have to study the question, read the question. Next we have to write answer of the question in our own language through our own conceptual understanding. And then we have to see how much we have learned by checking our answers, by checking the answers we have written. So this PQRST method also help us to remember whatever we have studied.
One thing I have to remember, we discuss different strategies to improve our memory, but it is not like that one strategy is better, the strategy is not better. Actually, we can use all of them together to improve our memory.